Assalamualaikum everyone and welcome to my channel of Beneficence, and thank you so much for stopping by and giving me some time. So when I tell people to love themselves and value themselves, they often ask me how. जब हम अपने आप को स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं या अपने आप को वैल्यू करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं? Self love is extremely important because you have to learn to love yourself first before you love life. And you have to be able to give love to yourself in order to give love to others. Do not ever underestimate the power of self love. Believe me, trust me, it's not selfish to value yourself at all. Be the star of your own life script. It's not narcissism. Yes, it will be narcissism if you try to be the star of someone else's script. So there's a difference. Before we start a discussion, I want to explain a little bit about our personalities. We all have different personalities and we identify ourselves by the type of personality that we have. Personality का word persona से निकला है, which is a Latin word, जिसका मतलब है मास्क. आपका वो चेहरा जो आपने दुनिया के लिए रखा होता है, जो दुनिया को दिखाने के लिए होता है. It's a combination of your qualities, your characteristics, your physical appearance, your traits, behaviors, your attitude. They make up your personality and who we are. ये पैटर्न होता है आपकी शख्सियत के मुनफरिद खसूसियात का. The true aspects of yourself, but perhaps not the full picture. Carl Jung, a Swiss psychologist, gives the idea of persona and shadow self. According to him, shadow self is the thing that person has no wish to be. और आपकी पर्सनैलिटी के वो पार्ट्स जो कि हिडन होते हैं, दबे हुए ट्रेट्स जिनका आप सामना नहीं करना चाहते हैं, आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में होता है एंड यू आर नॉट अवेयर दैट यू हैव दीज ट्रेट्स, जैसे कि गिल्ट, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, evil thoughts and intentions, torture, abuse, unrealistic desires, arrogance, in fact, all kinds of dark areas of your personality. So the skill is to own these dark parts of yourself through self-acceptance and self-forgiveness. Forgiveness से आप heal होते हैं emotionally. So it's really important to forgive yourself and accept yourself. According to Jung, the shadow is 90% pure gold. All we have to do is learning to take the responsibility to accept these hidden parts of ourselves. And शैडो की अवेयरनेस होगी तो हम अपना एहतसाब कर सकेंगे एंड अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. There is a saying by Alan Watts that when you find out that there was never anything in the dark to be afraid of, nothing is left but to love. Because एक आपकी आइडियल सेल्फ होती है, एक आपकी रियल सेल्फ होती है. रियल सेल्फ होती है who you actually are, जो आप असल में हैं. इसमें आपकी पर्सनैलिटी आ जाती है, आपके स्किल्स, योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, योर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स. असल में आपकी ज़ात से मुंसलिक हर वो चीज़ जो कि नज़र आती है, लोगों को भी उसके बारे में पता है, वो रियल सेल्फ में शामिल होती है. आइडियल सेल्फ इज वॉट यू थिंक दैट यू शुड बी, जो आपको लगता है कि आपको ऐसा होना चाहिए लेकिन आप ऐसे नहीं हैं. रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में जितना फर्क कम होगा, आपके लिए सेल्फ लव उतना ही आसान होगा. अब अगर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो डिस्पाइस सेल्फ क्रिएट हो जाती है, जिसका मतलब है द सेल्फ दैट यू डोंट वैल्यू. आपकी नापसंदीदा सेल्फ, व्हेन यू रियली डोंट लाइक योर सेल्फ, द बिगर द डिफरेंस, द मोर यू डेवलप दैट पार्ट ऑफ सेल्फ दैट यू रियली काइंड ऑफ हेट. मुझे ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, मुझे इतना वेट कम करना चाहिए, मेरा रंग गोरा क्यों नहीं है, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए या ग्रेड्स आने चाहिए, मेरी पे या सैलरी इतनी हो, फेसबुक पे मेरे लाइक्स इतने हो, मेरी लुक ऐसी हो, मेरे कपड़े ऐसे हो, मेरे जूते मैचिंग हो. All those shoulds that you keep measuring yourself. Now mind that I'm not saying कि आपको अच्छे कपड़े और जूते नहीं पहनने चाहिए. All I'm saying is do
do it for yourself, not for the validation and acceptance from others. There is a difference. So all those shoulds that you keep making yourself is actually the conditions of worth. Conditions of worth पे हम discussion एक next video में करेंगे, एक बड़ा लंबा चौड़ा chapter है. But the thing is that most of the shoulds that you have, you actually don't want. ये आपको दूसरों से मिलते हैं. For example, parents से, teachers से, expectations from your friends, media, advertisement. In fact, all the external factors जो आप somehow accept करते हैं as your ideal that you have to be like that or you should be like that. So let go of all the luggage that you are carrying, that others' perspective, that how you're supposed to be and what you are not supposed to be. For achieving self-love and self-acceptance, सवाल करें अपने आप से about all these shoulds. अपने आप से पूछें कि क्या ये वाकई वो है जो मैं करना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, या ये किसी और की नीड है. Ask yourself, who do you want to be from your own true authentic desire? It is actually what you want to be, or maybe this is what others want you to be. Because someone will always be prettier than you, someone will always be smarter than you, someone will always be younger than you. But that person is not going to be you. That is your power. Never look down upon yourself. So when I tell you to love yourself and value yourself and you ask me how, so the answer is remove all these shoulds from your life. जितना आपके रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में डिफरेंस कम होगा, आप खुद को वैल्यू करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे. आप खुद को वैल्यू करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग भी आपको वैल्यू करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे. And that is what today's message is all about. Thank you so much for listening. See you next time, inshallah, with a new topic. Take care of yourselves and have a beautiful day. Allah Hafiz.